Assalamu alaikum, my dear students. This is Abdul Sattar Memon, Assistant Professor of English, and today we learn something about quantifiers in English. Before I speak more about quantifiers and I define quantifiers, you should make up your mind. You should think what actually quantifiers are and how to use them properly in a sentence. So, what are quantifiers? Let's see. Let's see what are quantifiers. So for definition is concerned, it's self-explanatory. That is, it quantifies, it shows quantity or amount of something. Something means amount of noun. So here as a definition, we say a word that expresses quantity. In other words, we say a quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. जो भी noun और नाउन से पहले जो भी वर्ड क्वांटिटी को शो करे या अमाउंट को शो करे उसको हम क्वांटिफायर्स का बोलते हैं. तो सिंपली इट इंडिकेट्स अमाउंट और क्वांटिटीज ऑफ थिंग्स. ये अमूमन नाउन से पहले रखे जाते हैं तो इनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. तो ये देखें, क्वांटिफायर्स आर एडजेक्टिवल फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल और हाउ मेनी फॉर काउंटेबल नाउन्स. सो नाउन से पहले रखे जाते हैं जो हमें बताते हैं हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हाउ मेनी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. So let's see examples कौन से हैं. We have divided these quantifiers into three different categories. When one with countable nouns and other with uncountable nouns, और तीसरा जो है वो हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो the words, the quantifiers which we use with countable nouns or before countable nouns वो है many, few, a few, a number of, several, a large amount, a great number or majority. और uncountable number noun के साथ हम यूज करते हैं much, little, a little, bit of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of. तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें या तो अमाउंट बताते हैं या हमें क्वांटिटी बताते हैं नाउन से पहले. जैसे हम कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, उससे पहले हमने मैनी रखा तो ये क्वांटिटी बताते हैं. ठीक है, सॉरी. तो देखिए, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आपके सामने है, अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने है, आपके सामने है. और देखिए ये वो है, we use with both as countable nouns and uncountable nouns like all, enough, more or most, less or least, none or no, not any, some, any, a lot of, plenty of. तो ये वो क्वांटिफायर्स हैं जो हम काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's see what are the major differences, uses and differences between quantifiers. There are so many hundreds of quantifiers in English language, but here I will discuss only some quantifiers, a few quantifiers like that: much, lot of, a few, little, some. So much and many, what is the difference between much and many, lot of and lots of, and a few, little, a little, some or any. और तो हम देखेंगे कि what are the uses and the differences between these quantifiers. देखिए, much और many में फर्क सिर्फ इतना ये है, सेम ये चीज ये है, ये दोनों क्वांटिफायर्स हैं और क्वांटिटी को रेफर करते हैं. ठीक है, तो when we read out this, we use much and many, a lot of, to refer to big quantities. We use many with countable nouns and much with uncountable nouns, and we can use a lot of with both countable and uncountable nouns. As I have already discussed, in modern English it's very common to use a lot of in affirmative sentences instead of many or much. तो ये देखें, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने लिखा है many के साथ जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे लिखा हुआ मैनी पेन्स. तो मच के साथ ये जो अनकाउंटेबल्स लिखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके साथ मच, मनी. यहाँ पर मच के बाद जो नाउन आना चाहिए वो अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए. अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो दैट में भी इनकरेक्ट. तो ये जो अलाराफ है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है. A lot of pens, a lot of money. So we, in these three categories, we use a lot of with both nouns or uncounts. We'll go into the details later on. First see, basically जो ये lectures हैं वो मैंने बनाए हैं exclusively for the learners of English language, जो aspirants हैं, CSS के aspirants हैं, जो ETP जो entry test preparation
के जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं, जिसको स्पॉटिंग एरर का पता होना चाहिए, जो सेंटेंस में एरर्स कौन सी हैं, उसके लिए मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं ताकि उनको आसानी हो। ये देखिए जो सेंटेंसेस हैं, आई हैव मैनी पेन्स, तो यहाँ पर पेन के बाद पेन से पहले लिखा हुआ है मैनी। मैनी पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने लिखा है मैनी। अगर सेंटेंस जो होता आई हैव मच पेन्स, तो यहाँ पर पेन्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और अब मच यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मच के बाद जो नाउन आना चाहिए वो आना चाहिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पर देखें सेंटेंस है आई हैव मच पेन्स, वी शुड लेट अस आइडेंटिफाई द मिस्टेक हियर। So A, B, C, or this is a more simple sentence I have written here. I have much pains. तो apparently यहाँ पर जो सेंटेंस में मिस्टेक है वो है C। C इसलिए है कि यहाँ पर much की जगह पर many आना चाहिए, क्योंकि pains काउंटेबल नाउन है। Likewise, I have much money, अगर हम इसको लिखेंगे आई हैव मैनी मनी, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि मैनी के बाद ना काउंटेबल नाउन आना चाहिए। बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मनी के साथ सॉरी मनी के साथ मैनी लिखा हुआ है, तो मैनी मैनी मनी नहीं होगा, मच मनी होगा। यहाँ पर मिस्टेक है मैनी। सो हियर दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस मच एंड मनी। लेट्स गो इनटू द डिटेल। Much many sometimes they are used as alternate as well. तो much हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आए देखते हैं। देखें यहाँ पर much is used with uncountable nouns mostly in interrogative sentences and negative sentences. Sentence देखें, how much tea do you need? If it is written here how many tea, that will be incorrect. Why incorrect? Because tea is uncountable noun and therefore we have used here much. Likewise, we don't have, देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, दैट्स मोस्टली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम मच इस्तेमाल करते हैं। मच इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें कोई हम सवाल पूछें, तो ये पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमने यूज किया है मच। और देखें दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट साइंस। इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज मच। One more thing I have discussed in previous slide, that much के बाद knowledge uncountable noun आना चाहिए, जो यहाँ पर knowledge है। If we write sentence like this, we don't have many knowledge about science, the sentence will be incorrect. The sentence carries a mistake here, and mistake is many. Now you know the reason why is many mistake here, because many should follow an uncountable noun, whereas in the sentence many is followed by uncountable noun, therefore the sentence is incorrect. Now here in the second many, it's used with countable nouns mostly in interrogative sentences and negative sentences, like how many papers do you need? Now here this is also interrogative sentence, but the noun here is a countable noun, and here we don't have many papers in the office. Again, this is also a negative sentence, but here papers is uncountable noun. If we write sentence like this, if we don't have much papers in the office, the sentence will be incorrect. Now see, apparently it shows, it's feel, it is, we feel that there is no mistake in the sentence, but technically this is a mistake here. So the students should be much aware of these things, because there are certain minor mistakes here, and we need to identify those minor mistakes here. If we go ahead, lot of and lots of use uncountable nouns. We use with both uncountable nouns and countable nouns. But see what's the difference here? Lots of and a lot of use with uncountable and plural countable nouns, mostly in positive sentences. Now, अब देखिए यहाँ पर lot of and lots of is the same thing. We use here, there are a lot of ink in the ink pot. यहाँ पर ink जो है वो uncountable noun है, इसलिए हम इसके साथ हमने a lot of इस्तेमाल किया है। There was a lot of lots of ink in the ink pot. The sentence means the same. It has the same meaning. These both sentences are of same meaning. इसमें कोई वो नहीं है, इनकी मीनिंग सेम रहेगी कि इन पॉट में बहुत सारी इंक मौजूद थी। अब यहाँ पर इंक अनकाउंटेबल नाउन थी। यहाँ पर देखें there were a lot of students in the class. There were lots of students in the class. Now students यहाँ पर again countable noun है, इसका मकसद था many, और यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी much. So this is the same thing.
We go ahead, we have examples like that. There are many things to do, and we have a lot of time left. We don't worry. Many people take a train to work, and much Italian pizza is sold abroad. Now here much again, see, Italian pizza is a countable noun. So here, one more thing I must say, pizza, the correct pronunciation of this word is pizza, not pizza that people usually pronounce it. She plays a lot of sport. And when we want to emphasize really big quantity, we use add. So जब हमें इससे ज्यादा क्वांटिटी बतानी है तो हम इसको हम ऐड करते हैं so in front of many or much like that. There were so many passengers on the train. अब so यहाँ पर इस क्वांटिफायर को मजीद तकवीयत देता है, कुव्वत देता है. इसका मकसद that is in big quantity. And she had so much work to do. उसको बहुत सारा काम करना है. She stayed at the office until midnight. तो यहाँ पर अगर हम इस emphasize करें really big quantity को तो much और many से पहले हम so का इस्तेमाल करते हैं. Let's go ahead. एक बड़ी जबरदस्त चीज है और कंफ्यूजिंग भी चीज है. Few and a few. It's a very wonderful thing. Few and a few for uncountable noun, for countable nouns as well as uncountable nouns. हम इसको इस्तेमाल करते हैं few a few accountable noun के साथ और uncountable sorry और a little and little for uncountable nouns may seem very similar but they actually hold different connotations like that. अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें समझने की है कि what is the difference between few and a few. ये जो चीज है that is really very wonderful thing to learn, and a little is a really very wonderful. एक तो ये चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा. few और a few हम countable noun के साथ इस्तेमाल करते हैं और a little uncountable noun के साथ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब एक चीज जो हमें याद रखनी है वो a few और a little. देखें, एक a few है और few है, दूसरा a little और little. यहां पर हमने इसको डिवाइड किया हुआ a few and a little. इसका मकसद है कि speaker feels positively about quantity. Means a few and a little indicate that the speaker feels positively about quantity he or she describing, though he or she may not have much, it is enough. तो ये जो a few है इसका मकसद है ज्यादा तादाद में, अच्छी तादाद में. a little means अच्छी तादाद में, few means कम तादाद में. तो हम जाएंगे आगे वाली स्लाइड पर. ये देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट हैज अ फ्यू टेक्निक्स. नाउ अ फ्यू टेक्निक्स का मकसद उनके पास अच्छी खासी टेक्निक्स हैं. उनके पास अच्छी खासी टेक्निक्स हैं. वो कौन सी अच्छी खासी टेक्निक्स हैं? विच ही कैन यूज टू डिटरमाइन हिज प्रोडक्ट. तो इसका मकसद a few का मकसद है अच्छी खासी उनके पास टेक्निक्स हैं. द साइंटिस्ट हैज इनफ टेक्निक विच ही कैन यूज. इनफ टेक्निक्स हैं. यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे द साइंटिस्ट हैज अ फ्यू टेक्निक्स व्हिच ही कैन यूज टू डिटरमाइन, इसका मकसद है साइंटिस्ट डजंट हैव सफिशिएंट और इनफ टेक्निक which he can use to determine his product. Now see, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सेंटेंस है फ्यू a few, इसका मकसद है अच्छी खासी टेक्निक्स हैं. और यहाँ पर फ्यू का मकसद इनके पास इतनी अच्छी तादाद में टेक्निक मौजूद नहीं है. अब देखें एक जबरदस्त सेंटेंस है, द शॉपकीपर हैड फ्यू कस्टमर्स यस्टरडे. इसके बाद मकसद होगा कि शॉपकीपर के पास थोड़े तादाद में कस्टमर्स थे. बेचारा सारा दिन बैठा रहा, उसके पास बहुत कम तादाद में कस्टमर्स आए. और यहाँ पर शॉपकीपर हैड अ फ्यू कस्टमर्स यस्टरडे, इसका मकसद है बहुत सफिशिएंट कस्टमर्स थे, अच्छी तादाद में इसके पास कस्टमर्स मौजूद थे. ठीक है. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्यू कस्टमर का मकसद है कम तादाद में, अ फ्यू का मकसद है सफिशिएंट तादाद में इसके पास कस्टमर मौजूद थे. हम आगे चलेंगे. अब फ्यू और लिटिल के हम इंडिकेट करेंगे. इंडिकेट्स द स्पीकर फील्स नेगेटिवली अबाउट थिंग्स आर like this. I had a little money for lunch. यहाँ पर देखें हमने सेंटेंस लिखा है little, जो हम अनकाउंटेबल नाउन किससे पहले ये यूज करते हैं. तो यहाँ पर सेंटेंस है I have little money for lunch means I have enough money for lunch. सॉरी, I have a little money for lunch, मेरे पास sufficient money है जो मैं लंच खरीद कर सकता हूँ. I have little money for lunch means I don't have enough money for lunch, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लंच खरीद कर सकूं. तो ये देखें इस सेंटेंस में I have a little money for lunch, इसके पास इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, इसके पास अच्छी खासी पैसे हैं मेरे पास.
और यहाँ पर सिर्फ लिटिल, तो उसका मकसद है मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो देखिए ए का इस्तेमाल सारे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देता है। लेट्स गो ऑन टू द use of some other quantifiers like a sum and any. अब sum और any हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? Let's see. We use sum in positive sentences and any in negative sentences or questions like that. He bought some mangoes. यहाँ पर mango is noun and sum is quantifier. तो यहाँ पर देखें हम positive sentence में इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर देखें he didn't buy any mango, ये negative sentence है तो हमने यहाँ पर any लगाया है, हम sum नहीं लगाएंगे यहाँ पर। दूसरा जो इस्तेमाल है, we use both some and any with countable और uncountable noun के साथ। देखें, do you have sometimes for me, I don't have any idea about the examination। तो यहाँ पर देखें हमने इस्तेमाल की भी है चीजें। हम आगे चलेंगे, हमारे पास बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिफायर्स के। we do not use normally, we do not use normally use the quantifier some in negative and interrogative sentences, we normally use any। do you have any children? लाइक हमने देखा है आपके पास आपके कितने बच्चे हैं। डिड यू सी एनी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है। वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये नेगेशन है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इनमें हम यूजुअली एनी इस्तेमाल करते हैं, सम इस्तेमाल नहीं करते। आई डिडंट सी एनी फ्रेंड, मैंने यूज किया यहाँ पर आई डिडंट सी एनी फ्रेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वी हैव यूज्ड हियर एनी हियर। वी सॉ सम लायन एट द ज़ू बट वी डिडंट सी एनी टाइगर्स। Now here we have made the sentence into two halves. And first half the sentence is positive, so we have used here some, and the second half is negative, so we have used here any. But we can use some for offers and requests like, would you like some tea? And I want some apples, please. And so this is exception. So my dear students, these are quantifiers। इसके अलावा बहुत सारे hundreds क्वांटिफायर्स हैं जिसको हम करेक्ट यूज हमें आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।